चलो, complete the path. The given critical angle is 42 degrees for the glass. I incident like this with the angle 42. He is telling to complete the path. मतलब वो रे किधर जाएगा, जाकर बाहर निकलेगा कैसा. Critical angle they given as 42 degrees. And complete and show me. हाँ दिखाओ, पाथ कैसे दिखाओ. ओके, आप सात्विक डन. Complete the path. If critical angle is how much? 42 degrees. 42 degrees angle of incidence. So क्या होगा? I equal to C है तो क्या होगा? It. हाँ, हाँ देखो, हाँ देखो, करके देखो, ड्रा करो. ग्रेजिंग इमरजेंस राइट, ऐसा झूम बोल के निकलेगा लाइट, अगर मैं लाइट डांस से. ओके, बट रॉन्ग. रॉन्ग है क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस वन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे. ओके, वांटेडली दिया है मैं. Okay, so this angle is called angle of incidence. So it is how much? Total is 90. 42 means 48 degrees. Now क्या है? I is greater than C. Total internal reflection will take place. Okay, so with the same angle, angle of incidence equal to angle of reflection. Now whenever you incident, again you draw normal. We have to do some maths. This is how much? Total is 90, right? So this is 42. This is 90. This will be 48. So this is 42. Now angle of incidence is equal to angle of critical angle. Therefore, it grazes emergence. Zoom बोल के निकलेगा. Grazing emergence. Okay. So अगर मैं लेजर लाइट डालूंगा, जुप 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 बोल के आपको निकलेगा ऐसा. ओके, थोड़ा मैथ्स करके करने का. चलो, नो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम मॉडल करो. Complete the path. Critical angle they given as 42 degrees for the glass. डन. सो कैसा आएगा देखो. हाँ, ऐसा आया आपको सब सबको सेम. देखो, नॉर्मल इंसिडेंस मींस ऑलवेज इट विल गो स्ट्राइट ओनली. देयर इज नो रिफ्रैक्शन, मतलब डिवीजन नहीं होगा. ओके, सो दिस 90, दिस 45. व्हेन यू ड्रॉ नॉर्मल, सो दिस आल्सो 45, सो दिस आल्सो 45. नाउ हियर I इज ग्रेटर देन C, तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस विद एन एंगल ऑफ 42 डिग्रीज. वी डोंट नो सम एंगल में 40 डिग्रीज में गिरा. ओके, 45 राइट, 45 डिग्रीज में गिरा. ओके, नाउ इधर चेक करो. This is 45 because total is 90, right?
So definitely this is 90. And whenever you incident 90, it will go straight. ओके, सो आपको उधर मैथ्स अप्लाई करके एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करके चेक करो बार बार, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर लेसर बोल के करो। 30, 60, 90। डन ना? यस। नो, फाइंड आर आल्सो, फाइंड करो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द गिवन एज 1.5। बता देखो क्या आपका, ये सीधा जाएगा तो दिस 90, 30, 120, दिस इज 60, so this is 30 degrees. Now here I is lesser than C, क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बेंडिंग होगा। So angle of refraction we have to find करो। I know angle of incidence, refractive index I know, and air का refractive index also you know, angle of refraction, favorite formula, right? Snell's formula। कितना आया है? sin inverse 3/4। sin inverse 3/4 is answer। Okay, mu1 into sin I is equal to mu r into sin r। Okay, चलो, now we learn the concept, these all applications of the refraction only। Okay, so so circular filminess, this is also one of the application of रिफ्रैक्शन। देखो, सपोज मान लो इसको, हाँ, एक बल्ब है यार, ये डेंसर मीडियम है, बाहर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम। सो क्या होगा, व्हेन लाइट, बल्ब से लाइट आएगा ना, लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, ऐसे करके 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 एक जगह में इट ग्रेजेस इमर्जेंस हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल में इट ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगा। सिमिलर इधर भी आपको बेंड होगा अवे 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 करके एक जगह में एक ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज बिकमिंग 90, एंड दैट एंगल को वी कॉल्ड एज व्हाट? क्रिटिकल एंगल, वी रिप्रेजेंट एज सी। सो ये भी सी से रिप्रेजेंट करो, सी। सो क्रिटिकल एंगल है उसको, ये भी क्रिटिकल एंगल है। एंगल ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस कब होगा? व्हेन क्रिटिकल एंगल में ही होगा ग्रेजिंग इमर्जेंस। मतलब ऊपर से व्हेन वी आर सीइंग, आपको इधर तक ओनली लाइट दिखेगा, सर्किल फॉर्म में दिखेगा, सर्किल, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलते हैं। लाइक नॉर्मल फाउंटेन्स में डालते हैं लाइट, बहुत अच्छा है, वो उतना तक वो नहीं आएगा, उधर से बाद में डार्क हो जाएगा, लाइट इधर तक ही आएगा। ओके, ऊपर से देखने सर्किल, वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट यू नो सर्कुलर का एरिया ओनली वी आर ट्राइंग टू फाइंड। इसका रेडियस है कैपिलर मान लो, इसका रेडियस इज कैपिलर। ओके, नाउ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस का फार्मूला, एरिया कितना है? एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ओके, मान लो इसका हाइट इज h, ए बल्ब से सरफेस तक हाइट इज h, एंड व्हाट इज tan c? 90 है ना? tan c इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। tan c है, why we are finding tan c? because आपको रेडियस है ना, रेडियस से we can find this one। ओके, मुझे रेडियस इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल देखेंगे। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल? sin c इज इक्वल टू 1 by mu, छोटा बाय बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नाउ आई एम टेकिंग बिकॉज आई वांट टू फाइंड tan c। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल हेल्प ले रहा है,
it is opposite by hypotenuse. So this will be under root mu square minus 1. Now I'm substituting tan c के जगह में. Tan c is what? Opposite by adjacent, right? So 1 by under root mu square minus 1 is equal to r by h. Therefore, r is equal to h by under root mu square minus 1, because we know h, we know refractive index, but we don't know tan c वगैरह. That's why we are trying to convert in terms of this one and h and mu. So r find separate find करके then you can find the area of the circle. So formula learn करना पड़ेगा. h by under root mu square minus 1 is a formula. h by under root mu square minus 1. So r अगर आ गया तो then radius का pi r square कर सकते हैं. Okay. कपड़ा. Okay. चलो. Now एक IIT क्वेश्चन है, करो and tell answer. So 6 centimeters. Yes, correct. 6 centimeters. The formula बाजू में है ना, इसलिए आ गया. But you have to remember that time or specific time में h by under root mu square minus 1. Okay. चलो. Now applications of TIR, total internal reflection का applications. Okay. So किधर use होगा? Generally sparkling of diamond. Sparkling of diamond. क्यों diamond shine करेगा? Tell me. Diamond क्यों, उसका क्या प्रॉपर्टी है? साथी को टेल राइट, साथी बोलो. डायमंड चमक क्यों हो रहा है? मतलब वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, किधर क्यों इसी मटेरियल में हो रहा है? अदर मटेरियल में गोल्ड आल्सो वी कैन पुट, राइट? It's mainly because of refractive index. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है उसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स More deviation of light. एक्चुअली क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज सो लार्ज, सबसे ज्यादा. याद है ना 2.42 बोल के बोलता ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सो लार्ज डायमंड का. ओके, वी नो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला sin c इज इक्वल टू छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सो large, the critical angle is so small. Critical angle is so small, जो भी लाइट गिर रहे हैं ना डायमंड के ऊपर, I is always greater than C, because critical angle is so small. जो भी इंसिडेंट आ रहे हैं ना, it is always greater than C. उसके वजह से क्या होगा? Total internal reflection will take place inside the material. They will cut a diamond such a way that आपको एक ही जगह में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके 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 एक ही जगह में सुप बोल के आएगा. तो लाइट दैट स्पार्कल विल कम टोटल TIR के वजह से ओनली. ओके, दैट कटिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. विदाउट कटिंग का कुछ नहीं आएगा. कटिंग करके वो एक जगह में स्पार्क आएगा ना, स्पार्क उधर से निकलेगा. दैट्स व्हाई व्हेन वी गो फॉर एनी फंक्शंस में गया तभी देखे रहे क्या डायमंड लग रहे, चमक रहे बोल के लगा.
लगेगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल लेस है, आई इज ग्रेटर देन सी TIR. दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Okay, second application is मिराज. सुना ना क्या है मिराज? In deserts, it looks like there's an oasis, but यस, isn't there? दूर में देखने से आपको लगेगा देयर इज ए वाटर इज देयर बोल के. ओके, so what is mirage means? Optical illusion observed in deserts over hot surface like coal tar roads. Also you will see in highways mein, if you go also you will feel that there is a water on the road. How we can confirm there is a water बोल तो some reflections we are able to see. मतलब उधर पेड़ है ना, पेड़ का रिफ्लेक्शन ऑन द रोड पर गिरेगा, आपको लगेगा कि ओके देयर इज अ वाटर बोल के. सो फीलिंग होगा बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शंस. Okay, that is called mirage. Okay. Okay, so इसका देखो कैसे है. सपोज मान लो is a tree. Okay, and this is the layers of the atmosphere. Okay, now क्या होगा? नॉर्मली रोड में, डेजर्ट एरिया में नीचे इज वेरी हॉट, नीचे एयर इज वेरी हॉट, ऊपर एयर इज वेरी हॉट, लैंड के तरफ हॉट और वो हॉट, लैंड वाला. इफ इट इज सो हॉट द एयर राइजेस, मतलब ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है, राइट. बहुत हीट हो तो पार्टिकल्स विल गो अवे, रेयर हो जाएगा, ऊपर डेंसर है. मतलब टॉप टू बॉटम क्या होगा? इट इज बिकमिंग डेंसर टू रेयर, राइट, हीट एरिया में. ओके, नाउ पेड़ से लाइट आ रहा है. ओके, मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, पेड़ थोड़ा अच्छा लगेगा. यस, अच्छा लगेगा. ओके, नाउ इधर से लाइट आ रहा है, डेंसर टू रेयर, क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, जाएगा ऐसा. अगेन और भी अवे हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस गोस ऑन इंक्रीजिंग, अवे हो जाएगा. ऐसे करके 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 एक जगह में आई इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा. ऐसे करके करके आई इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल. नाउ क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. ओके, दैट्स वे इधर से ऐसा आएगा, एंड नाउ बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल करके फाइनली इधर रीच होगा. ओके, हियर हमारा आई रहेगा. ओके, नाउ हमारा हमको लगेगा लाइट इज कमिंग सम वेयर हियर, कभी भी. ओके, लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर. सो आपको पेड़ का रिफ्लेक्शन दिखेगा. सो दैट मीन्स हम लोग डिसाइड करेगा, हम लोग साइंटिस्ट बन जाएगा ना हम लोग. यस, देयर इज अ वाटर, लिख लो बोल के बोलेगा. बट उधर नहीं रहेगा. दिस कॉल्ड मिराज. डायग्राम ड्रॉ तो ड्रॉ कर लो. नेक्स्ट एप्लीकेशन रहेगा, थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, विच इज ऑप्टिकल फाइबर्स. ऑप्टिकल फाइबर्स, इसके बारे में सुना होगा ना? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर नहीं सुना? ऑप्टिकल फाइबर They're glass wires that transmit signal. ग्लास. Wire. ओके,
एक्चुअली ये इंटरनेट केबल है, एक्चुअली इंटरनेट केबल का ऑप्टिकल फाइबर्स। ये जियो बोलता है, जियो बोलता है कि हमारा सबसे ज्यादा स्पीड इंटरनेट है। वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी करने से क्या होगा एक्चुअली, एक एक वायर वेरी थिन वायर्स रहेगा, उसके अंदर में ग्लास रहेगा, ग्लास रहेगा पूरा। वेन एवर द सिग्नल इज पासिंग, अवर इंफॉर्मेशन विल बी पासिंग थ्रू द सिग्नल वाइज, मतलब इट विल जाके हिट करके अंदर जाएगा, राइट? द सिग्नल, वो ऑलवेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ओके, सो रिफ्लेक्ट करके इट विल रीच वेरी फास्टर टू द अदर प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट से। दैट्स वाई वेरी फास्ट बोल के बोलता है। ओके, सो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इट इज अ थिन हॉलो वायर ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज सराउंडेड बाय ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसा रहेगा देखो, हाँ दिस इज, सो एक्चुअली वो केबल कैसे रहेगा, इनसाइड देयर इज ए मटेरियल कॉल्ड कोर, इसी के अंदर में ग्लास रहेगा, इसे ऊपर ग्लास रहेगा कोटिंग में। ओके, नाउ ये ऊपर कोर के ऊपर में क्लैडिंग बोल के रहेगा। एक कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस। कोर एंड क्लैडिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हेन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर नो, ओके, एंड इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल हैपन। सो सिग्नल कैसे आएगा, ये अंदर जाके 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 टोटल जाएगा ऐसा, इट विल कम आउट फ्रॉम द, विल गेट द थिंग, मतलब वायर हमारा, नहीं तो सिग्नल वेस्ट भी नहीं होगा, बिकॉज ग्लास है ना, परफेक्ट रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। दैट्स व्हाई अगर सिग्नल अच्छा नहीं है तो इफ यू टेल हेलो, द अदर पर्सन विल हियर बोलो बोल के। ओके, सो सिग्नल अच्छा है तो करेक्ट हेलो बोल के सुनाया जाएगा। ओके, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर्स। That's why we also took a geo connection, but it's always stopping. So it is used as a guided medium for transmitting an optical signal from one place to other place. Very thin रहेगा, so many millions of wires will be there inside. Yes. So इसका working देखो, light is incident on one end of the fiber at small angle, it goes inside and suffers repeated total interreflection। देखो light will be going ऐसा total interreflection करके बाहर आएगा। Is a core and is a cladding, always denser to rarer only light is entering. So two conditions are satisfied. Is the working of the optical fibers. Okay, there is one terminology called
light pipe means a bundle of optical fibers ko we call as light pipe, bundle of optical fibers. A light pipe will be useful for medical purpose में we are useful. वो क्या है आपको स्टमक में इनसाइड में जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, लाइट पाइप को इनसाइड माउथ के थ्रू दे विल सेंड. देयर इज बी स्मॉल कैमरा आल्सो विल बी देयर. सो व्हेन इट इज गोइंग लाइट भी रहेगा पूरा एंड कैमरा जाएगा स्क्रीन में दिखता जाएगा. वो उधर जाके दे विल सी दैट ओके इधर प्रॉब्लम है, इधर ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोल देगा लाइट पाइप का. ओके, सो दे विल यूज दिस लाइट पाइप. Medical and optical instruments में they will use. And one thing is transmitting and receiving electrical signals in telecommunication में they will use. So these are the things in the critical angle total reflection done पूरा. So what are the applications we done till now? Refraction का applications only we are doing. Refraction का first application is real depth and apparent depth का we done. Second application is refraction through glass slab. Third one is critical angle total interreflection वगैरह किया है. And circle of illuminance is also one of the example of the refraction में critical angle के terms में. Now last other thing is prism का करने वाला है. Prism के बाद lenses is the last topic. Reoptics के बाद we'll go for modern physics. तो 4 चैप्टर्स हो गए तो आपको लगेगा फिजिक्स हो गया बोल लगेगा. Then we can go for reoptics. चलो okay. Now next one is refraction through prism. Prism easy है. Prism क्या है? It is a solid transparent refracting medium whose refracting surfaces are not parallel. देखो this is a refracting surface. They're not parallel, but they inclined with some angle. So how many phases actually? Front में triangle, back side में triangle, ये rectangle, नीचे rectangle है. So these phases, refracting phases are not parallel. Such type of object is called as prism बोलते हैं उसको. And prism में आपको some terminologies you have to know. ये चैप्टर परफेक्शन हो गया था. 2 क्वेश्चंस अच्छे से आउट ऑफ 25 2 क्वेश्चंस पक्का. Electromagnetic waves is easy. 1 question will be coming from that. Electromagnetic waves मैक्सिमम 1 आवर बैठेगा तो पूरा हो जाएगा आपको, मतलब परफेक्शन. सो 3 क्वेश्चंस इसमें. Alternating current is also easy. 4 questions. So whichever easy I'm telling you. थोड़ा बड़ा chapters I'm leaving, but easy chapters I'm leaving. Current electricity don't leave. Current electricity also sometimes papers में 2 questions भी आ रहा है. वन सर्क्यूट देगा, वन कुछ कन्वर्शंस ऑफ गैलोमीटर टू एमीटर वगैरह भी कुछ दे रहा है ऐसा. ओके, जैसे लास्ट 2 months इज लॉक्ड फॉर पेपर्स. आपको आया नहीं आया छोड़ो, यू हैव टू डू द फुल पेपर्स. यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी क्वेश्चन करके, मतलब रिवर्स प्रोसेस में जाओ. ऐसे द पर्सन्स हु आर डूइंग लास्ट 2 months full papers, they will only get a rank. And many people will think whenever paper starting, they'll think that sir I don't know actually individual chapters, I want to prepare individual chapters. नहीं है. individual chapters प्रिपरेशन के लिए आप जो भी चैप्टर्स है, मतलब अभी टाइम है वो कर लो, आपको प्लान के हिसाब से कर लो. बट इधर उल्टा जाने का, आपको जो आता है वो परफेक्शन पहले अभी तक जो भी कर रहे हैं ना वो लिखता जाओ. आने के बाद एक एक क्वेश्चन का विच चैप्टर कौन सा है, नहीं तो आंसर्स रहेगा ना, आंसर्स आल्सो आई विल पुट इन वेबसाइट में एक एक का. ओके, एक एक फुल पेपर लगाना, मतलब प्रीवियस पीवाईक्यू पेपर ओनली, लाइक 2026 25 ऐसा जाएंगे पूरा. ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली इफ यू लर्न फ्रॉम बैक साइड बाय सीइंग, आई थिंक यू कैन नो सी. थोड़ा देखेगा तो आपको यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई ये न्यूटन लॉस ऑफ मोशन है, ये थर्मोडायनामिक्स से. कैन से फॉर्मूला शीट पूरा आपके पास सामने रहेगा. आप जो जो मिस्टेक्स है वो आपको चेक कर सकते हैं. ओहो ये फॉर्मूला डालने का बोल के समझ में आएगा, लर्न कर लो. ऐसा रिवर्स पे में जाओ, नहीं तो कभी भी द पर्सन्स हु आर गोइंग इन द जेईई मेंस रिटन टाइम में आल्सो दे विल आस्क मिस और थोड़ा टाइम में तो अच्छा है बोल के लगेगा उनको. कभी भी फुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का कभी भी फुल नहीं होगा कभी भी. मतलब इवन स्टेट रैंक आल्सो व्हेन गोइंग आल्सो दे विल फील दैट और चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए थोड़ा करने का बोल के. बिग पोर्शन है ना, दैट्स व्हाई रिवर्स प्रोसेस कर लो. जनवरी इज एग्जाम राइट, सो मैक्सिमम
दिसंबर जनवरी में एक्चुअली 15th और 17th से एक्चुअली एंडिंग में होगा, 21st ऐसा होगा. सो दिसंबर जनवरी कर लो, चलता है, नो प्रॉब्लम. दिसंबर जनवरी, लाइक जनवरी 21st तक डेली 1 पेपर किया तभी हो जाएगा. सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी पेपर्स यू कैन फिनिश. सो दिसंबर जनवरी, सो वी हैव ओनली अक्टूबर नवंबर ओनली. सो इसमें जो भी रिवीजन कर रहे हो वो पुराने वाला थोड़ा रिवाइज कर लो. मेजर फॉर्मुला शीट रखो, बिकॉज आपको आपको ऑल आता है. और अभी तक जो भी किया है फर्स्ट ईयर से जो भी कर रहे हैं न्यूटन ट्रांसफॉर्मेशन वो सब आता है. बीच बीच में आई विल आल्सो रिवाइज, चाहे तो कुछ है तो रिवाइज करेंगे पुराने वाला. बट फॉर्मुला शीट तो बाजू में रखो, ऑल फॉर्मुला शीट बाजू में रखो. नहीं फर्स्ट ईयर सेपरेटली, सेकंड ईयर सेपरेट रखो. बी रेडी फॉर दैट. ओके, चलो. नाउ एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म मींस ऐसा नहीं कि ओनली दिस वी आर फेमस विद दिस एंगल, दिस एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म वो नहीं है. एंगल ऑफ प्रिज्म का बेसिक डेफिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन द फेजेस इन विच लाइट इज इंसिडेंट and from which light is emerges. Look at example here, light is incident and light is emerges. Angle of prism is 90. Suppose मान लो here light is ऐसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है and ऐसे निकल रहा है. Tell me, angle of prism is how much here? Angle of prism is how much? 30 or 70? Means answer is 70. Where the light is incident and coming out, this angle is called angle of prism. चलो. Next one. Angle of prism and angle of deviation. Angle of prism and angle of deviation. इधर लर्न कर लो अभी, इसका फॉर्मूला क्या है वगैरह लर्न करेंगे. देखो, this is a prism front face you're seeing and this is the angle of prism, right? So angle of prism में क्या होगा? Light is incident like this. Draw a normal. You refraction हो रहा है and इधर से बाहर आ जाएगा, right? This is angle of incidence I. This is angle of emergence E, and this is angle of refraction R1, this is R2. Okay, and this is 90, right? 90, and this is also 90. Normal draw करो ना, surface से normal. And this angle is how much? Tell me. In this triangle में R1 R2, this is 180 minus R1 plus R2, right? हाँ. Now देखो, कभी भी याद रखो I and E are not equal. R1 R2 are not equal. But एक स्पेशल केस में एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बोलते उसको. एक स्पेशल केस में I and E will be equal, R1 and R2 will be equal. Okay, that case देखेंगे. But other than that, it is not equal. Okay. Now here our intention is to find angle of prism का and R1 R2 का relationship चाहिए. Okay. So you tell me this मान लो P Q R S. In this में quadrilateral, the sum of the angles of a quadrilateral is 360. So करो A plus 90 plus 90, AB 90 90 plus 180 minus R1 plus R2. This कौन सा quadrilateral लिया? P Q R S लिया. Is equal to 360. Sum of the angles in a quadrilateral is 360. So 90 plus 90 plus 180 is 360. Cancel हो जाएगा. So A is equal to R1 plus R2. खत्म. A is equal to R1 plus R2 is the first formula we have to learn. A equal to R1 plus R2. Now इसका angle of deviation भी learn करेंगे. Angle of deviation. Angle of deviation क्या है? If there is no prism, it would have gone straight. Because of prism, it got deviated like this, right? So इसको extend करो. This is called as angle of deviation. Delta. Angle of deviation. Right? If there is no prism, it would have gone straight. Because of prism, it got bended, right? This is called angle of deviation. Okay. This angle is how much? This angle. Total angle is I. This is R1. This is I minus R1.
This angle is how much now? Total angle is E. This is total angle is E. This is R2. This is E minus R2. Right, Samyana? Okay, now if I draw like this, so this is delta. This is I minus R1. This is E minus R2. So ये वाला exterior angle is equal to sum of the two opposite interior angles. So delta is equal to I minus R1 plus E minus R2. So delta is equal to I plus E minus R1 plus R2. So delta is equal to I plus E minus A. R1 plus R2 is A, right? So this is the second form. Delta is I plus E minus A. So whenever आपको प्रिज्म का दिया है A equal R1 plus R2 यूज करो, delta equal I plus E minus A. Anyone if you don't know, you have to use Snell's law and find the value of some other angles. Okay? करेंगे questions? Yes, इसका बेस में करो. Yeah. 60 degree and 60 degree. 60 and 60, yes. Yes. हाँ, साथ में कितना है? Same 60 and 60. 60 है. आपको क्या है? Snell's law लगाने का श्याम. देखो, we find आपको A is equal to R1 plus R2. Okay, ऐसे आएगा. So this is R1, this is R2. So then we can get इसमें R1 R2 आ जाएगा and delta के जगह में I plus E minus A. Okay, so how much you got? ये आपका R1 कितना है श्याम? R1 is how much? न करो, वही देखो, आपको mu1 into sin I is equal to mu2 into sin R. R1 फाइंड करो, पहले R1 फाइंड करो, टेल आंसर. बिकॉज ई चाहिए इसके लिए, आपको ये दो चाहिए कनिसम, देन ओनली वी कैन गेट दिस. हाँ, अप्लाई करो. mu1 into sin 60 is √3/2 is equal to mu2 is √3 into sin R1. So √3 cancel, 1/2. So R1 is 30 degrees. If R1 is 30, A is 60, angle of prism is 60. So therefore R2 is 60 minus 30 is 30 degrees. So R2 भी आ गया. Again Snell's law apply करो, you can get E value. Okay. So again you will apply Snell's law. E value is also कितना 60 degrees. Now आपको delta you can find, right, by using the formula I plus E minus A. So A you know, E you know, I you know.
is also you get 60 degrees. Okay, so Snell's law कभी भी देखो, अभी तक chapter का ending तक also it is doing Snell's law is valid, right? Yes. अगर same type of question. Find angle of deviation and angle of emergence. Donna, how much? E I'm getting is 90 degrees and delta is 60. This is 60 yes. आया? सत्य आ रहा है, मेरे नहीं बोल रहे, सात्विक कान में बैठ रहे, Yes, आंसर sir. बोलो. हाँ, यस, सेम मॉडल सेम थिंग करने का. स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, अगेन a इक्वल r1 प्लस r2 यूज करो, अगेन विल गेट दिस वन, अगेन स्नेल्स लॉ विल गेट दिस वन. ओके, so calculate the value of angle of incidence when a ray of light on one face of a equilateral glass prism produces an emergent ray just grazes along the adjacent face. मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसे आके ग्रेजिंग हो जा रहा है adjacent face, मतलब angle of refraction 90. ओके, मैं फाइंड करो. तो आई वाली चाहिए. इक्वेटर प्रिज्म है ना, ऑल ओवर 60 60 60. So since second वाला angle of emergence grazing emergence दिया ना, you start from back side से आ जाएगा. Like mu इसका refractive index how much they given, √2, right? So Snell's law apply करो, from this you will get R2, from that R1 आ जाएगा. So from back side से आ जाओ. Sine inverse √3 minus 1 by 2. हाँ, √3 minus 1 by 2 √2. Why? R1 I got it as 15 degrees. So that 15 का आ गया, फॉर्मूला आता है आपको, नेट में देख लिया. so it's √3 minus 1 by 2 √2, right? हाँ, दैट ओनली बाहर किया क्या, नहीं तो नेट में देखा. I remember it's from 10th class. ओके, 10th क्लास. 10th क्लास में 15 डिग्रीज किधर है क्या, बोलो. समथिंग 15 डिग्रीज नहीं है. हाँ, आपका कितना है, आ गया आंसर आपको, √3 minus 1 by that only आया.
ओके 15 डिग्रीज का क्या है, कैसा याद है? अब तो उसको एमपीसी में करवाया क्या, मैथ्स पे करवाया क्या 15 डिग्रीज बोल के? हाँ I have it written right here on my cupboard. I've stuck ओहो, the chart. साइन 15 में आपको यूज कर सकते हैं फिर कभी भी ऐसा है तो साइन 60 माइनस 45, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी minus cos a sin b. We know the 60 and 40, right? So if you solve LCM लेते we'll get the answer as root 3 minus 1 by 2 is equal to sin a. So I equal to sin inverse root 3 minus 1 by 2 आएगा. Okay? चलो. Now we'll go factors on which angle of deviation depends on. Okay, tell me is कौन से factors में depend है? कौन से factors में depend है? Delta I plus E minus A, right? So formula. So it is depends on the angle of prism. Material of the prism means nothing but refractive index पर depend होगा. As angle of incidence is increasing, angle of deviation also increases. And refractive index भी increase हुआ तो angle of deviation also becoming increasing. Right? Sadiq on the video. Wavelength of light. Wavelength of light already you know. Refractive index is inversely proportional to wavelength of light. So if more the wavelength, lesser the refractive index, and mu is also proportional to delta, right? So that means it is inverse relation में. Okay. And last one, very important one is angle of incidence. This is important. Light हो गया आपका, ray optics हो गया सात्विक स्कूल में? What they doing now? So now they are doing modern physics. Huh? Modern physics. Modern physics. Wave optics भी हो गया? Yes. Sir. Oh, nice. Formulas पूछो? No. चलो. So angle of incidence पर depend होगा. And here wavelength का refractive index का you tell me. That's why आपको prism में which will have more refractive index, red violet prism से पास करने से विबज्योर कलर्स आ रहा ना. The deviations are because of this only. Deviations are happening because of this. Okay, red will have more wavelength. Refractive index उसका red is less. If this is less means the angle of deviation also less. That's why आपको विबज्योर में ऊपर रेड आएगा, वायलेट आएगा. टेल में विबज्योर में ऊपर मतलब ऐसे बोलने से मैं वो सोचने का व्हाट आर यू वांट टू टेक Red. रेड आएगा, नीचे वायलेट आएगा. लीस्ट डिविएशन इज रेड एंड मोस्ट डिविएशन इज वायलेट बिकॉज ऑफ दिस वन. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इंपॉर्टेंट है. ओके इसका ग्राफ क्या है वगैरह विल सी नाउ. देखो variation of angle of deviation with angle of incidence. Experimentally what they done is they found this one, angle of deviation versus I. मतलब prism में as I go on increasing the angle of incidence, they are observing the angle of deviation कितना कितना हो रहा है. Okay, so as the angle of incidence is increasing, angle of deviation decrease. एक particular angle के बाद it started increasing and this is not exactly U shape नहीं है, थोड़ा bend हो गया ऐसा. Okay, so at particular angle of incidence में उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा मिनिमम, minimum angle of deviation. This is the one. After minimum angle of deviation, it is started increasing. Okay, as I increases, angle of deviation also increases. At particular point को we call as delta minimum. Okay. Now इसका at this delta minimum only, I and E are equal. R1, R2 will be equal. This delta minimum है. तो इसका points लिखेंगे. तो इसका पॉइंट्स लिखो. डेल्टा इज मिनिमम ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ आई. लिखो डेल्टा इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ आई. नेक्स्ट वन
for every delta except delta minimum there is only two angle of incidences. So देखो we drew this one, right? Delta versus I, ऐसा आके इधर इसके बाद ऐसे जाएगा, राइट? तो मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं रहेगा. हाँ, दिस इज आई. देखो एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम, एक्सेप्ट डेल्टा, इफ आई टेक हियर, इफ आई ड्रॉ हियर सम एंगल डेल्टा में, सम एंगल ऑफ डिवीजन डेल्टा में, तो आपको दो रहेगा. वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस. आई कॉल दिस इज I1, I2. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस दो रहेगा, बट एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन में ओनली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस. इसी में दोनों इक्वल हो जाएगा. ओके, एंड दिस इफ आई टेक, दिस इज x1 distance and this is x2 distance. देखो x2 is greater than x1. Okay, that means I can tell like this, it is not a parabola. Parabola बोल तो exact ऐसा U shape में ऐसा आएगा, but थोड़ा bend हो जाएगा उस तरफ. x2 is greater than x1. It is shifted towards right. It is shifted towards right. So angle of incidence, angle of deviation. Prism के बारे में only we are learning. इसका एक फॉर्मूला आएगा, that's it. वो फॉर्मूला लूंगा तो पूरा प्रिज्म हो जाएगा. Then we have to start spherical surface lenses कर जाएंगे. हाँ बेटा, ओके. और देखो ना करो एंगल इफ एट 32 degrees delta minimum, he told delta minimum में 32 degrees में, find the angle of emergence at 25 degrees में angle of emergence कितना है, tell me. So ग्राफ में क्या दिया, इनडायरेक्टली ग्राफ का हेल्प ले लो. एट आई इज इक्वल टू कितना, 32 degrees में दे ऑब्जर्व डेल्टा मिनिमम. एट अदर एंगल्स में, अदर डेल्टा में क्या होगा, we have angle of incidence, angle of emergence, right? I1, I2. Okay. He told find the angle of emergence at I equal to 25 degrees. So 25 degrees में, if I is 25, asking angle of emergence is how much? Okay. I'll give you options. Tell me. रुको चलेंगे. Let them tell. Tell Satyak. You should tell. I is 32 degrees at different delta. मतलब different delta में they observed angle of incident is 25 degrees. I want angle of emergence is how much? बोलो श्रीराम, आप बोलो ग्राफ में. हाँ ठीक है, आप बोलो शिवंगी. 41 degrees. यस, 41 दिस आंसर. गुड. देखो सात्विक, दिस डिफरेंस कितना है, टेल में. 32 minus 25 how much? 11. 32 minus 25 11. I thought that 21. Okay, 25. Yes, 7, sir. कितना? 7. 7. Now this is x1, right? This is x2. You tell me x2 is greater than x1, right? So 7 से ज्यादा रहेगा. So 32 plus 7 बोल तो 39 से ज्यादा रहेगा. 39 से ज्यादा वाला कौन सा है? 41. खलास. Okay. So like this questions एग्जाम में आ रहा है. Okay, लास्ट वन लिख लो, हो जाएगा. कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन लिख लो. कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन, आई टोल्ड यू I equal to E, R1 is equal to R2 is equal to R. Okay. Now formula A is equal to R1 plus R2. A is equal to R1 plus R2 is equal to R plus R equal to R. So therefore R is equal to A by 2.
Okay, this is the first one, refracted angle you got. Next, delta. These are conditions, right? First, second, third. Fourth one, delta. Delta is equal to I plus E minus A. So delta minimum में क्या होगा? I and E are equal. So 2I minus A. So I is equal to delta minimum plus A by 2. The fourth condition, delta minimum plus I by 2. Now if I apply the Snell's law at the surface, I and R, this refractor is mu. Suppose I am applying Snell's law. So 1 into sin I is equal to mu into sin R. So therefore mu is equal to sin I by sin R. Sin I के जगह में ये वाला डेल्टा मिनिमम प्लस A by 2 by sin R के जगह में A by 2. This is a formula you have to learn. So at delta minimum में they will ask to find the refractive index of the prism. So mu is equal to sin delta minimum plus A by 2 by sin A by 2 is the formula. इसका numericals करके then we have to go for the spherical surface. So maximum we will try to finish by next week. Next week तक हो जाएगा हमारा पूरा.